हेलो स्टूडेंट्स, आज शुरू करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला वीडियो है और यदि आपको वीडियोस अच्छा लगता है, कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं तो उसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं इसके बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, व्हाट काइंड ऑफ ब्रांच ऑफ इट इज फिजिक्स वी मस्ट नो टुडे। हम लोगों को समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इट मींस दैट अगर मैं इस इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड को दो पार्ट में ब्रेक करूंगा तो पहला वर्ड होगा इलेक्ट्रो और प्लस अगर मैं करूंगा तो हो जाएगा ये स्टैटिक। इलेक्ट्रो वर्ड जो है वो इवेल्युएट हुआ है कहां से, दैट इज इवेल्युएटेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन। और स्टैटिक का मतलब हम सभी लोग अच्छे ढंग से समझते हैं, दैट इज एट रेस्ट। इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है और एट रेस मतलब जो मोशन नहीं कर रहा हो, जो मूव नहीं कर रहा हो। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन व्हिच वी स्टडी अबाउट स्टैटिक स्टेट ऑफ चार्ज एंड द वेरियस फिनोमेनन रिलेटेड विद द चार्ज एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, अब यदि हम चार्ज की बात करें तो व्हाट इज चार्ज वी मस्ट डिस्कस। हम लोगों ने चार्ज के बारे में काफी कुछ केमिस्ट्री में पढ़ रखा है। तो एवरी सब्सटेंस हैज अ एटम एंड एवरी एटम हैज न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होता है और साथ ही साथ होता है प्रोटॉन। चूंकि न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, देयर इज नो चार्ज ऑन द न्यूट्रॉन बट प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज। So we can say that the nucleus of every atom is positively charged. Now third, another particle which is revolving around the nucleus, that is known as electron, and electron is negatively charged particle. So charge on proton is plus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, and charge on electron is minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. And we know that every nucleus has same number of electron as well as same number of proton. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी न्यूक्लियस के अंदर सेम है, इसका मतलब यह है कि उसके अंदर सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, इट मींस दैट एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। दैट्स व्हाई वी कंसीडर एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। Now what is charge? In class 10th we know that I is equals to Q by T. Flow of charge with respect to time is called current. Now from here we will find out the value of charge, that is Q is equals to I into T. So this is going to be formula of a charge. SI unit of charge is 1 ampere into 1 second. If a current of 1 ampere flow through any conductor in 1 second, that is, you may say that 1 coulomb of charge is there. Okay, this is the unit of charge, and the dimensional formula of charge is concerned, that is A into T. This is going to be the dimensional formula of charge. Now we would like to discuss about the important topic related to the charge, is properties of charge. Properties of charge, it means that there are two types of charge.
positive charge as well as negative charge. We know that similar charge repel each other and opposite charge attract each other. This is the basic property of charge. Similar charge एक दूसरे को repel करते हैं और opposite charge एक दूसरे को attract करते हैं. Third property is charge always lies on the surface of conductor. Charge always lies on the surface of conductor. How does charge always lie on the surface of the conductor? Let us discuss with the diagram. Suppose this is going to be the spherical conductor and you have given positive charge to this conductor. As we know that similar charge repel each other, or the charge we have given, positive charge we have given to this spherical conductor will repel each other, and due to the mutual repulsion all these charges inside this spherical conductor will repel each other and comes to the surface of conductor. This is the main cause that whenever charge given to any conductor always lies on the surface of conductor, क्योंकि जितने भी चार्ज हम उस कंडक्टर को देते हैं रिपल्शन के कारण वो सारे के सारे चार्ज कंडक्टर की सरफेस पर आ जाते हैं, है ना. तो सिमिलर charge repel each other, opposite charge attract each other, and the second property, charge always lies on the surface of conductor. Now we would like to discuss about fourth property of charge. The fourth property of charge is that charge is always conserved. Charge is always conserved. It means that charge can neither be created and nor be destroyed. Okay. The total charge of any isolated system is always remains constant. For example, these are the two conductor A and conductor B. Conductor A and conductor B. Conductor A has got no charge, conductor B has got no charge. These two spherical conductors are electrically neutral. Suppose we have rubbed these two spherical conductor, and after rubbing, suppose conductor A has got positive charge and conductor B has got negative charge. Why does conductor A has got positive charge? Because while rubbing, due to the friction, the conductor or spherical A has lost some electron, and because of that electron moved towards B, and conductor A has got excess of proton, and because of excess of proton, this conductor A has got positive charge. This conductor B has accepted or absorbed negatively charged particle, so it has already negative charge, and after accepting negative charge there will be excess of electron or excess of negative charge, so this conductor B has got negative charge. But suppose conductor A has given 5 electron to B and conductor B accepted 5 electron, it means that conductor A has got plus 5 charge and conductor B has got minus 5 charge. The total charge on this conductor is plus 5e plus minus 5e, it is equals to 0. Still the total charge on this isolated system is always 0. Before rubbing or before charging, total charge was 0. After charging or rubbing, the total charge of this system is also 0. This is called conservation of charge. Charge can neither be created and nor be